kids, welcome to maths class, and today we'll do visualizing solid shapes, 3D shapes. So the concept we are going to learn in this chapters are faces, edges and vertices of 3D objects, nets of 3D shapes and drawing of 3-dimensional shapes. Start with introduction. In our daily life, we see many things around us like almirah, cylinder, football, ice cream cone, bottle, road roller, etc. All these things occupy space and have dimensions. तो ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और उनका कुछ ना कुछ डायमेंशन है. लाइक डायमेंशन मीन्स लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. So such type of shapes are called 3D shapes. Here you can see some shapes. All these are 3D shapes. We have already learned about the 3D shapes in class 6. Let us revise the important term and the shapes in brief. So here you can see this is cuboid. Number of faces. It has 6 rectangular faces, 12 edges and 8 vertices. Cube, 6 square faces, 12 edges and 8 vertices. Cylinder have 3 faces, 2 edges and no vertices. If we talk about the cone, it has 2 faces, 1 curved and 1 plane, and 1 edge and 1 vertices. Sphere, it has 1 curved face, no edges, no vertices. Triangular prism, it has 5 faces, 9 edges and 6 vertices. Regular prism, it has 6 rectangular faces, 12 edges and 8 vertices. Triangular pyramid, it has 4, 3 lateral and 1 base faces, and it has 6 edges and 4 vertices. Square pyramid have 5 faces, 9 edges and 5 vertices. Next, nets for building 3D shapes. A net is a geometrical solid is a 2D figure that can be folded into 3D shapes. अगर किसी भी हम 3D shapes को जब open करते हैं तो एक 2D shape बनता है जिसको अब अगर again fold कर दें we'll get the 3D shapes. That is called as net. So you must all have seen a sweet box. So sometime जैसे कभी कभी हम बॉक्स बनाते हैं तुम देखते हैं ना कि जैसे बॉक्स ऐसे खुला होता है उसको फोल्ड करते हैं तो फिर वो प्रॉपर बॉक्स बन जाता है. सो दैट इज कॉल्ड द नेट ऑफ दैट शेप. नेट ऑफ द क्यूब, व्हेन वी विल फोल्ड this net such a way that 1 lies opposite to 5, 3 lies opposite to 6 and 2 lies opposite to 4, then the cube will be formed. So इस कंडीशन में अगर हम इसको फोल्ड कर दें तो 1 किसके ऑपोजिट में आएगा? 5 के ऑपोजिट में. 3 जो आएगा वो किसके ऑपोजिट में आएगा? 6 के. 3 6 के एंड 2 4 के ऑपोजिट में. देन फोल्ड इट एंड इट विल मेक अ क्यूब. नेक्स्ट, nets of cylinder. When we roll it along the curved surface, it will get converted into a cylinder. अगर हम इसको इस तरीके से रोल करें तो ये क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर बन जाएगा. And this is the net of cylinder. Next, net of tetrahedron. 4 represent the base and 1, 2, 3 are the 3 triangular lateral faces. So जो 4 है वो बेस को बता रहा है एंड 1, 2, 3 जो है साइड्स जो है उसकी लेटरल फेसेस है उसको बता रहा है. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस सेशन 13.1. Fill in the blanks. An object that occupies space is called a 3D shapes or solid shape. Next, write T for true and F for false. A cube has 6 faces. Yes, that is true. Next, form the cube by following nets. So इस नेट को हमें फोल्ड करके जो है क्यूब बनाना है. क्लियर? तो किस तरीके से फोल्ड करेंगे ये आपको देखना है. नेक्स्ट, फॉर्म अ क्यूबॉइड बाय द फॉलोइंग नेट्स. सो आपको बताना है कि किस फेस के सामने कौन सी फेस आएगी. सो व्हेन यू फोल्ड इट, तो जब आप फोल्ड करेंगे इसको तो आप देखेंगे कि 1 के अपोजिट पे आएगा 2, 5 के अपोजिट में आएगा 6 एंड 3 के अपोजिट में आएगा 4. क्लियर? नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. दिस इज द नेट ऑफ सिलेंडर. नेक्स्ट, ड्रॉइंग of 3-dimensional shapes. To draw a cube of the given measurement,
Step 1, let us draw the cube of side 4 unit. Draw the square of 4 into 4 square centimeter. Step 2, draw an identical square as shown in the figure. इस तरीके से जैसा हमने पहले किया था उसी तरीके का एक स्क्वायर, उसका आइडेंटिकल हम ड्रॉ करेंगे. जॉइन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स. देन हम इस तरीके से उनके कॉर्नर्स जो है उनको ज्वाइन करेंगे. क्लियर? सो ये हमारा एक बन जाएगा क्यूब. नेक्स्ट, टू ड्रॉ द ट्राइंगुलर प्रिज्म of the given measurement. So first we will draw a triangular face like this. Now draw the 3 edges of the convenient length. उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 edges draw करेंगे. Draw another triangular end at the back, और back side में भी एक triangle draw करेंगे. So ये हमारा बन जाएगा triangular prism. Next, visualizing solid shapes. Sometime when we see the combined shape, some of them may be hidden. There are 2 layers of 20 cubes. So यहाँ पे इसमें 2 layers हैं और 20 cube. So 1 layer में 20 है तो 2 layers में कितने हो गए, 2 into 20 40. So total कितने cubes हो जाएंगे इसमें, 40. Clear? Next, practice session 13.2. Draw an isometric sketch of the cube of dimension 3 unit. So you will take the isometric sheet and draw the cube of given dimension, that is 3 unit. ये आपको खुद से draw करना है. So you have to practice all the questions here. Let's recall. 3D shapes can be drawn in 2 dimensions. Objects with occupied space are called 3D objects. 3D shapes are easily drawn with the help of isometric sketches. Next is miscellaneous practices. So all these questions are based on the concept we have covered in chapter. So you have to practice all the question. Next, multiple choice questions. Take the correct option. The road roller is in the shape of cylinder. Road roller जो होगा वो cylinder की shape का होगा. Clear? So here we end the chapter. I hope you understand the chapter well. Now to practice it.